and social orders. There are 4 social orders. What are those 4 social orders? Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. There are 4 social orders and 4 spiritual orders. For society to keep on the right situation, condition, sustainable condition, we have 4 social orders. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and 4 spiritual orders. For spiritual development, there are 4 orders. Okay. So now neither of them is there. Neither spiritual order is there, nor social order. Everything is topsy-turvy. Yes. Anything else you remember? No. It also detail. Okay. Anything else? Ramananda. Chaturma is asking from now Ramananda. What is asking? He is asking, yes, what is the purpose of human form? Shrey. So then yes. आगे कहो यही बात जो आगे कहो right? Anything else? आगे कहो and this like this, so many options were given by Ramananda. Then what happened? Hearing about Krishna. चलेगा यह होए ये चलेगा. Then आगे का हुआ. Then further comes. So ultimately it ends up at pure devotional service, and also slowly it ends up at Madhurya Rasa, pure devotional service to the Lord in conjugal love. So we are going to seek the eligibility of candidate for accepting devotional service. Third chapter. Are you all able to hear, see this? Third chapter. Okay, someone can read this out if you are able to. On account of his association with Mahatmas, a great souls, 100% in the devotional Service of the Lord. Lord, one may attain a little bit of attraction for Sri Krishna, but at the same time one may remain very much attached to activities and material enjoyment, and not be prepared to undergo the different types of renunciation. Such a person, if he has unflinching attraction to Krishna, becomes an eligible candidate for discharging devotional service. This attraction for Krishna consciousness is in association with pure devotees is a sign of great fortune. It is confirmed by Lord Chaitanya that only the fortunate person, by the mercy of both a bona fide spiritual master and Krishna, will get the seed of devotional service. In this connection, Lord Krishna says in Srimad Bhagavatam 11th canto, 20th chapter, verse 8, my dear Uddhava, only by exceptional fortune does someone become attracted to me, and even if one is not completely detached from fruitive activities or is not completely attached to devotional service, such service is quickly effective. Devotees may be divided. Okay, that's all. So यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महात्माओं के संग में कोई भी जीव भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन उनको उनके हृदय में आता है कि नहीं? लेकिन अट्रैक्शन आने के बावजूद भी वो व्यक्ति
अपने कर्मकांडीय कार्यों में और साथ साथ इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में काफी आसक्त। तो भगवान भी अच्छे लग रहे हैं और साथ साथ में क्या अच्छा लग रहा है, इंद्रिय तृप्ति भी अच्छा लग रहा है। इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है? लगभग सभी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना कितना कठिन है। फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्तों के संग में ये महान फॉर्चून है कि थोड़ा सा उनके भगवान के प्रति आकर्षण पैदा होगा। बहुत बड़ा फॉर्चून है, ग्रेटेस्ट फॉर्चून। ग्रेटेस्ट फॉर्चून किनको मिलता है? किनको मिलता है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, किसी भाग्यवान जीव को मिलता है ग्रेटेस्ट फॉर्चून। तो कितने सारे जीव हैं इस संसार में? ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड टू द पावर ऑफ अनलिमिटेड जीवास आर देयर। तो उनमें से बहुत ही फॉर्चुनेट सोल्स को मिलता है क्या? ये भक्ति लता बीज। क्या भक्ति लता बीज मतलब क्या? भगवान के भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग में रहने के कारण भगवान के प्रति थोड़ी सी आकर्षण। लेकिन हम लोग के पास थोड़ा सा तो कहीं तो थोड़ा सा भी तो लेश मात्र आकर्षण है, इसलिए हम लोग भक्तों के संग में है, नहीं तो कब के निपट निकल लिए होते। ठीक है, कई बार बहुत ही कम आकर्षण होता है और इंद्र तृप्ति का कौवा बहुत जोर जोर से काव काव करता है, तो हम भगवान के भक्तों का संग छोड़ देते, है कि नहीं? छोड़ देते हैं। लेकिन फिर मटेरियल वर्ल्ड में जाके फिर सुनाई दिखाई देता है क्या? या यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, अच्छा था भगवान के भक्तों के संग में ही थे, फिर से चलते हैं भगवान के भक्तों के संग। तो ये सारे लोग ऑसिलेट करते हैं। कितने लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है ऑसिलेट्स में? पहले भक्तों के संग में आए, फिर लगा कि दिस इज टू मच है, दिस पीपल आर लिटिल टू मच क्रेजी so let's go out the normal condition of life, normal standard temperature, pressure and volume, STP। वहां पे देखते हैं कि no, whatever rasa is there in Krishna's association and duty, I'm not getting that here, so let us back again, rather I'm getting more negative rasa, so many problems। so ये greatest fortune है, greatest fortune के कारण ही मिलता है। यदृच्छया मत्कथालो जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। भगवान श्री कृष्ण इस प्लैनेट को छोड़ने से पहले, सब छोड़ने के एकदम पहले, मतलब छोड़ने ही जा रहे हैं, उसी समय अपने दोस्त और अपने सबसे क्लोज सखा, कौन है उनका? उद्धव। अर्जुन तो है, लेकिन अर्जुन से भी क्लोज सखा कौन है? उद्धव है। तो उद्धव से बातें करते हैं और उद्धव को बोलते हैं क्या? इफ somehow or other by good fortune one develops faith in hearing and chanting my glories, faith in hearing and chanting Krishna's glories, such a person, being neither very disgusted with nor very much attached to material life, should achieve perfection through the path of loving devotion. So what Lord is telling? Neither is very much disgusted with material life, and nor he is too much attached with material life. He is in between. And how many of you are in between? Everybody is in between. So Lord is pointing out this, that whether he is neither fully disgusted with material life, nor he is fully attached with material life, and he has got little faith in the service, in the Shravanam and Kirtan of the Lord, hearing about Krishna and glorifying Krishna. So for that person should achieve perfection through the path of loving devotion to me. In this way, he will surely achieve the perfection. So now next. Who is it? There are two options. Yes, what two options are given? Not either little attached or too attached. If one is not completely detached from physical activity or not completely attached to the body. Not completely detached. Matlab, he is little attached with fruitive activities and
Not completely detached from. not completely attached to devotion. Not, that's why he's not completely attached to devotional service. Because he's not completely detached from sense gratification and fruitive activity, that's why he's not completely attached from devotional service. So this is the way Krishna is telling, oh thou, this is the process of Sravanam getting slowly. On this way he will achieve the perfection. He is not achieved yet. That's what he is meaning. Krishna is telling that a person who has got little Shraddha because of association of pure devotees, he whether either is not fully detached from material life as well as is not attached with Krishna and is in between somewhere. So he will practice Krishna consciousness, Pravanam and Kirtanam, and he will surely attain the perfection. He is not telling that this is the perfection. We must understand this. This is not the perfectional level. ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु जी now this is the what Krishna is telling. Krishna is telling the what people are actually into. So that we can traverse the path of devotional service, sadhana bhakti, and we can attain to that level of perfection. Right? That's what he's telling. So this attraction of Krishna, this attraction for Krishna consciousness, next. We discussed it. Yeah. Devotees may be divided into 3 classes. Divided into classes. The devotee to the first or uppermost class is described as follows. He is very expert in the study of human scripture, and he is also expert in putting forward arguments in terms of those. He can very nicely present conclusion with perfect discretion Discretion. and can consider a devotional service in a Decisive way. he understands perfectly that the ultimate goal of life is to Krishna, to attain the transcendental loving service of Krishna. And we know that Krishna is the only object of worship and love. The first class devotee is one who has strictly followed the rules and regulations under the training of the unified kingdom master, and has sincerely obeyed in Accord with. relevant scripture. Thus being fully trained to preach and become a spiritual master. He is considered pastor. The pastor devotee never deviated from a principles of higher authority, and he attains being Firm faith of faith in scriptures. by understanding its all written narrative. When we speak of arguments and reasons, it means arguments and reasons on the basis of relevant scriptures. The pastor devotee is not interested in dry speculating measures for wasting time. In other words, one who has attained a mature determination in the matter of devotional service can be accepted as the pastor devotee. So first class devotee, 3 class devotee हैं, first class, second class है. फर्स्ट क्लास डिवोटी का क्या सिम्टम है बताया गया कि वो शास्त्रों के सार को बहुत ही दक्षता से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को. He can very nicely present conclusions सार जो है उसको बहुत दक्षता से परफेक्ट डिस्क्रिप्शन से प्रेजेंट कर सकते हैं डिवोशनल सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए. डिवोशनल सर्विस कैसे डिवोशनल सर्विस टॉप मोस्ट है उसको बताने के लिए. And he is perfectly knowing that Krishna and love of Krishna is ultimate. You don't have any doubt about it. You don't have any confusion about it. He knows Krishna is the only object of worship and love. और उसके बाद बताया जा रहा है फर्स्ट क्लास डिवोटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वो सारे रूल्स रेगुलेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में ट्रेन किए गए हैं. And will be fully trained to preach and become a spiritual master himself. Means he now a preacher. There is never between him and authoritative what's called conflicts.
With the authority, a first class devotee never gets into conflict. He never gets into argument and reason. He understands argument and reasons to be futile wastage of time. So these are the symptoms of first class devotee. So even though we are not on that level, we must know it. That these are the standards of first class devotee. What is required? Only thing is required, reading the Shastras so that we can know the conclusions, following the process of Krishna consciousness given by spiritual authorities. And third one is what? What is third one? To get ready for preaching. Only three things. Then you are automatically in the first class devotee. Yes? So easy. Do three things and you are first class devotee. What is that three things? Read the Shastras meticulously, get the conclusions. Second, follow the authority and get trained into the bona fide authority. Then third is called try to preach. So these are the three symptoms. That's what Srila Rupa Goswami tells. Srila Rupa Goswami's first class devotee definition is very accessible. Right? So this is like Bhakti Rasamrita Srila Rupa Goswami tells the definition of a first class devotee, very accessible. Right? There is another, Kapil Muni tells the first class devotee symptoms. What are they? He tells what? That you see everybody devotee. So that's quite very high, like high level, right? But Srila Rupa Goswami gives a beautiful definition of first class devotee. Second class devotee. Let's see. Second class devotee. And we can figure out where ourselves, we can put our काटा है ना सुई बता सकता है कि अब कहाँ है कि नहीं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सेकंड क्लास devotee next Second class devotee has been defined by the following. It's not very expert in arguing on the of British scripture, but he has found faith in the object. The purpose of this description is that second class devotee has found faith in the superior of devotional service, but he may sometimes fail to offer arguments on the strength of revealed scripture to an opposing party. But at the same time, he is still unwanted with any such as that Krishna is the supreme object of worship. तो सेकंड क्लास ड्यूटी ये होते हैं जो भगवान की भक्ति के ऊपर उनका पूरा विश्वास है ऑब्जेक्टिव पूरा पता है कि यस आई नो दिस प्रोसेस इज परफेक्ट बट समबडी challenges him that how you are following like this then he will not able to speak properly and he is not able to defeat or neither he is able to convince him any person he is not able to convince. But he has himself great faith, बहुत श्रद्धा है भक्ति के प्रति. So he will never go on to leave Krishna consciousness, but somehow he is not able to establish the conclusions of Shastras. Yes. So this is the second class devotee. He has fully decided that Krishna is the supreme object of my worship. Third class devotees are described as such. तीसरा third class devotee कौन पढ़ेंगे? Yes, Dharma Prabhu. Unified a third class is one whose faith is not strong and who at the same time does not recognize the decision of the Revealed scripture. The unified faith can be changed as someone is with a strong argument or by an opposite. Unlike the second class devotee who cannot put forward arguments and evidence from the scripture, but who still has all in the object. The unified has no firm faith in the object. Thus, he is called unified devotee. Yes. So we can put in order like we can make a table. Devotee, first class, second class, third class. The second column, faith. Faith. The first class devotee faith means firm faith plus a faith
which can preach others. Second class devotee, firm faith, but cannot preach others. And third class devotee, very little faith, the faith can be removed by anyone. So this is the faith wise we see. So the first class, second class, the third class. First class devotee is the preacher. Second class devotee is not the preacher. I mean, it will be very difficult for him to preach. And third class devotee will be preached by any materialist. Anybody will come and say, hey, ki korchis? Naam jap korchis? Bhagwan, mata kharab ho gaya che. Mata kharab ho gaya tumhara. Kya naam jap kar raha hai? इतना सारा नाम यहाँ पे देखो, लैला मजनू, ये सब नाम जप करना चाहिए अभी ना, रंगीन कलरफुल लोग घूम रहे हैं, चलो दर्शन करते हैं, नाम छोड़ो, तो नाम छोड़ के वो सीधे घूमने निकल जाए. तो थर्ड क्लास ड्यूटी विल बी प्रीच्ड बाय, कैन बी प्रीच्ड बाय समवन, है कि नहीं? तो कोई भी आके ऊपर नीचे का लॉजिक देगा सेंस ग्रेटिफिकेशन का, और उसको बहुत ही कन्विंसिंग लगा, हाँ बिल्कुल बात सही बोल रहा है कि नहीं? तो हम लोग को देखना चाहिए कि कौन से लेवल में है. तो थर्ड क्लास डिवोटी का लेवल है बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है. इसलिए कम से कम हमें फर्स्ट क्लास लेवल डिवोटी बनना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास. सेकेंड क्लास इज ऑल्सो नॉट सो कंफर्टेबल. वन शुड बिकम फर्स्ट क्लास डिवोटी. व्हाट क्लास? थैंक यू. सो हाउ टू बिकम फर्स्ट क्लास डिवोटी? यस, Jai. First class devotee means read Bhagavatam. Yes, perfect. And preach. Read and speak. And Follow the rules and regulations. follow the rules and get trained up. Get trained up in process of devotion service. Without training, there is no way going home back to Godhead, isn't it? Then there is no way. It's not like, oh, we are in a process, we are in Krishna conscious Prabhu, we are in practicing for 20 years. But still somehow not get trained. Then it's not like overnight we just got up one day, early in the morning, and we see ourselves pure devotees. Everything is all on, all the loving affairs with the Supreme Lord as well as devotee arouses, and love flows like Bhakti Mukh Pravatam Toime Prasampu, like Ganga flows from Gomukh to Bay of Bengal, like that. It doesn't happen like that. It's a process, it's training. It's training. As an you somehow or other you sneak into the line of people going into Golok Vrindavan, you get into Golok Vrindavan, and somehow you started doing service there. Even though not trained, what's there? So training, everything happens in the material world. That's the material world is place of training and rectification, right? It's a training and rectification center. Unless you become pure, there is no going out, no going into Golok Vrindavan. ऐसा नहीं कि पहुंच गया वहां पे and suppose रूप मंजरी के some service. Hey, my dear little Manjari, can you please go and just get some flower? And we go and get some flower, and we will find a flower is not there only at the time of Rasa dance. And then another Sakhi has to be sent. And here go आया तब कहाँ गया उसको सेवा के लिए भेजा हुआ है. देख रहे हैं यहाँ पे वो पेड़ के नीचे बैठ के सो रहा है खरा के मारा. है फूल आने भेजा तुम यहाँ पे सो रहा. अरे नींद नहीं आएगा क्या सोने नहीं थे हम लोग, नित्य लीला कर रहे हैं हम लोग. तो वो नहीं, वहां ये सब नहीं हुआ. Everything has to be done here, not there. So one has to be trained up. So the number of years doesn't matter. 1 year old devotee could show more spiritual fervor than a person who is for 20-30 years in Krishna consciousness. Yeah, it depends upon how much he has advanced, taken up the training of devotional service. Seriously, it doesn't mean that I am for 20 years in devotional service and somebody is coming just now and he is doing so many services. It happens. It has been seen many times. And no, how can we do this?
I am more senior devotee than this person. No, it's not like that. So as a spirit soul, everybody is eternal. Body is changing. Body is always somebody is old, somebody is young. But spiritual advancement is always something which is never to be judged on the basis of how old one is. Getting the point? So somebody has he was about to just get into the bhava and prema. Somehow he fell down, he has to take another birth. But next life he gets in Krishna consciousness, then he will start from where? He will not start from Shraddha. His Shraddha will start, even though he will be like, I don't know anything. Once he starts, then he starts. He starts like boom, boom, he goes so high up. Immediately, how high means he doesn't start fighting with authorities, but immediately he shows so intense attachment toward devotion service and Krishna. So, like that. So, if we take up the training, then it should be visible. These all symptoms should be visible of the first class devotees. Okay, so maybe if Hoga need to be off, go. You are in the approved. Yes. Okay, you will change it, no? So next, who will read? Other classification of An example of. Acha, say. Well. made in the Bhagavad Gita. It is stated that four classes of men, namely those who are state, those who are in need of money, those who are strict, and those who are wise, begin devotional service and come to the Lord for healing in the matter for their respective self. They go in some place of worship and pray to God for Mitigation. of material distress or for some economic development or to satisfy their Inquisitiveness. The wise man who simply realizes the greatness of God is also counted among the unified such beginners can be elevated to the second class or first class platform if they Yes. तो नियोफाइट डिवोटीज का भी 4 डिवीजन है. क्या क्या 4 डिवीजन है? 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं. अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी. तो नियोफाइट डिवोटी द थर्ड क्लास डिवोटी के 4 कैटेगरी. पहला क्या है? आर्तो. आर्तो मतलब बहुत दुख था संसार में, बहुत प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. तो चलो भक्तों के संग में आ गए. यहाँ पे देखिए सब कुछ परफेक्ट है. यहाँ पे तो भक्त लोग मजे कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, नाच रहे, घूम रहे, हंस रहे और फिस्ट कर रहे हैं. अच्छा लगे हैं. यहाँ पे पूरा हमारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा. तो ऐसे लोग आते हैं, इनको कहा जाता है आर्तो. ये नियोफाइट का सबसे. सो दिस इज थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास डिवोटी. In third class devotee, there is fourth class devotee. So in third class, fourth class devotee means those who come to Krishna consciousness to mitigate their material problems. Then third class devotee are those who come to Krishna to get money, to get taka, to economic development. Krishna is Lakshmipati, Balaji. So he is money उसके पास है, taka उसके पास है. भगवान को बताते हैं, भगवान बहुत दिक्कत चल रहा है, कड़की चल रही है, पैसे नहीं है, तो थोड़ा कृपा कीजिए, कुछ पैसे बैंक में दिलवा दीजिए ना. आपकी तो हम सेवक हैं, आप तो आपको पता ही है हम आपके सेवक हैं. हमारा आपका कितना पुराना रिश्ता है, नित्य रिश्ता है. पैसा थोड़ा करवा दीजिए, आपको कुछ भेंट चढ़ाएंगे. 4 लाख रुपया अगर इनकम होगा तो 2 लाख देंगे. तो ऐसे लोग भी आते हैं और आते हैं भगवान को सर्विस करते हैं. भक्त लोग भी करते हैं, शुद्ध भक्त भी ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए करते हैं. डिपेंड करता है क्या, ये जो नियोफाइट डिवोटी है ये भगवान से पैसा लेगा और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन लगाएगा. लेकिन ऐसा डीलिंग भगवान के शुद्ध भक्त भी करते हैं. भगवान को बोलते हैं, भगवान पैसा देते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट किसका है? कृष्ण का ही. और उनसे प्रार्थना करते हैं, ये प्रोजेक्ट करवा दो, बस आपको मैं कुछ भेंट दूंगा, स्वीट खिलाऊंगा. तो भगवान बोलते हैं ठीक है, कर दे. तो दोनों ही डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन पर्पज ऑफ डीलिंग इज डिफरेंट फॉर ए नियोफाइट एंड ए प्योर डिवोटी. जस्ट लाइक वी वेयर इन गोवर्धन सम डेज बिफोर, और वहां पे किसी तरीके से मेरा बड़ा सौभाग्य था भूरिजन प्रभु से मिलने का.
गुरुजनपुर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और बहुत ही वैष्णव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के फाउंडर समझिए प्रभुपाद जी के बाद। तो बता रहे थे कि ये जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है गोवर्धन रिट्रीट सेंटर का 12 एकड़ में बना हुआ है और पूरी बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है ना, जैसे लगता है कि क्या राजमहल है जैसे। इट्स लाइक यूज heavy. If you go there, you feel like I should just stay here for eternity. So beautiful place, just on the feet of Govardhan Mountain. तो प्रभु बता रहे थे कि हमें जगह मिला। उसके बाद मैं बालाजी के पास गया था, बालाजी और तिरुपति के भी कुछ भक्त लोग आए थे NYPC में, तो उनको बताते हैं आपके कारण मैं बालाजी का दर्शन कर पाया और लड्डू ऑफर किया उनको, स्वीट वृंदावन से स्वीट ले गए थे, उनके साथ डीलिंग करी थी उन्होंने। ये GRC कंप्लीट हो जाएगा तो उनको मैं स्वीट चढ़ाऊंगा तो स्वीट लेके गए थे वृंदावन से तिरुपति, वहां पे बालाजी को स्वीट चढ़ाया क्योंकि यहाँ पर बालाजी ने उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। उनका प्रोजेक्ट मतलब किनका प्रोजेक्ट? हाँ, बालाजी का ही प्रोजेक्ट है, गोवर्धन का ही प्रोजेक्ट है, ISKCON का ही प्रोजेक्ट है। उन्हें अपना उनका अकाउंट नहीं है, उन्होंने पूरा सब कुछ किया और ISKCON को गिफ्ट दे दिया, जिससे कि भक्त लोग वहां पे अपनी सेवाओं को जारी रख सके। बोले थे आप लोग जब आए मुझे लग रहा है कि मैंने GRC का जितना ही प्रोजेक्ट का सेवा किया मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आप लोगों के लिए तो इसको बनाया गया था। So like that, so very different. So third class devotee is one who comes to Krishna for getting money, but he trying to utilize those money into his own sense gratification. Doesn't know that actually money belongs to him, and by doing sense gratification, he is going to suffer also. So then fourth class, second class devotee is who comes for inquisitiveness. बहुत उनको इच्छा है, बहुत ही जिज्ञासा है, जिज्ञेस को उनको जिज्ञासा है कि क्या होता है ये, क्या होता है वो, क्या होता है संसार, क्यों हम दुख भोगते हैं, क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन होता है। एक लड़का था हम जब दूसरे कॉलेज में विचार करते कल्याणी में, बहुत इंक्विजिटिव था, बहुत इंक्विजिटिव, दिन भर वो मेरे पीछे घूमते रहता, सर जी इसका मतलब बताइए, उसकी ये क्या है, वो क्यों हो रहा है, इतने लोग दुख क्यों खा रहे हैं, इंक्विजिटिवनेस। तो थर्ड क्लास में सेकेंड क्लास एंड फोर्थ क्लास में फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है? जो बुद्धिमान है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, मतलब उनको पता है हम आत्मा है, हम सोल नहीं, हम बॉडी नहीं। ही इज वेरी मच बुद्धिमान, उसको ये पता है, उसको पता है कि संसार में सब भुगत रहे हैं, दुख खा रहे हैं, उनको पता है कि मैं भी दुख खाया हूँ, मैं बहुत दुख खाया हूँ। और उसके बाद फिर वो भगवान के पास आते हैं, किसके लिए? और अपनी जो बुद्धि है उसको बढ़ाने के लिए, और आते हैं बहुत सारे शास्त्र पढ़ते। दे आर द पीपल दैट कम and they will go directly to the bookshelf of any temple or any place. They won't just roam around and keep a corner. They go to the book and then to the devotees. They will have more association with the devotees because he is a wise person. He is not simply inquisitive to just satisfy the inquisitive. He is a wise person. He has realized much, but still he is a neophyte, नया है, लेकिन फर्स्ट क्लास है, नयो में first class, a wise man who simply realizes the greatness of God is counted among the neophytes. So different examples दिए गए, 8 बज चुके हैं, आज सैटरडे है, तो एक दो पैराग्राफ और ले लेते हैं, क्या बोलते हैं? यस नो? यस, आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। यस कौन सा देश का ये सब स्लोगन है? वो लोग में हरि बोल ही चलता है, और कुछ नहीं चलता। Someone can read from here. An example of a unified class is Bhagavad Gita. He was in need of his father's kingdom and therefore engaged himself in devotional service to the Lord. Then in the end, when he was completely purified, he declined to accept any material benediction from the Lord. Similarly, Bhagavad was distressed and prayed to Krishna for protection, after which he became a pure devotee. Similarly, Sanatan, Sanan, and Samatkumar were all in the category of wise, thankful persons, and they were also attracted by devotional service.
A similar thing happened in the assemblies in the Nemi Charming forest, headed by the Sikh Sauraka. They were inquisitive and were always asking Kundu Goswami about Krishna. Thus, they achieved the association of a pure devotee and became pure devotees themselves. So, that is the way of limiting person. In whatever condition one may be, if he is fortunate enough to associate with pure devotees, then very quickly he is elevated to the second class of the class. यस, सो यहाँ पे 4 प्रकार के लोगों का स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया गया है। जो दुख में आते हैं उनका क्या एग्जांपल है? गजेंद्र, है ना? गजेंद्र जानते हैं? गजेंद्र दुख में भगवान को पुकारा है, दुख से पहले बड़े मजे में था। तो जैसे ही ग्राह उसको पकड़ता है वैसे ही भगवान को, वैसे नहीं पुकारता, पहले बहुत ट्राई करता है खुद से निकलने का, बहुत सालों के बाद भगवान की याद आती है, फिर भगवान उनका उद्धार करते हैं। उसके बाद फिर जो अर्थात थी पैसे के लिए कौन है स्टैंडर्ड एग्जांपल? ध्रुव महाराज, जो पैसे के लिए गया था। पैसा और पोजीशन ये तो चाहिए संसार में, है कि नहीं? किसको नहीं चाहिए पैसा और पोजीशन? कोई है क्या? सबको चाहिए, इसने हाथ में उठा है, तो सबको चाहिए। तो पैसा और पोजीशन, ध्रुव महाराज से बड़ा किसी के पास हो सकता है एम्बिशन? बताइए, नहीं। ब्रह्मा जी से ही बड़ा पोस्ट चाहिए था उनको, समझिए, और उस पोस्ट को पाने के बावजूद भी उन्हें परम गति मिला। उसके बाद फिर तीसरा, अब पहला व्यक्ति जो ये था गजेंद्र, उसको ही परम गति की लाभ हुई। कैसे? उनको भक्तों का संग मिला। हाँ बताइए, भक्तों का संग मिला कि नहीं? यस नो? और ग्राह का मिला ना संग, वो जो अंदर में क्रोकोडाइल था उसका संग मिल रहा था उसको, है कि नहीं? वो क्रोकोडाइल भी पिछला एक देवता था बेचारा, वो गिर गया था, उसका नाम था हुहू। 2 गंधर्व है हमारे हेवनली प्लैनेट में, बहुत फेमस है, हाहा और हुहू। तो बोलते ना हाँ वो मत करो, तो गंधर्व ऐसे गान करते हैं कि लोग बहुत ही आनंद में रहते हैं, हाँ वो करते हैं। तो इसलिए उनका नाम शायद हाँ वो कर दिया। तो हाहा और हुहू, तो हुहू गंधर्व थे, भगवान के पास नहीं थे लेकिन गिर गए थे, तो उनका भी संग लाभ हुआ, लेकिन बहुत ही कठिन संग लाभ हुआ, है कि नहीं? तो भक्तों के संग में हम लोग आते हैं, और एक भक्त बोलता है प्रभु इस भक्त के कारण मुझे बहुत दुख हुआ, इस भक्त ने मुझे बहुत दुख दिया है, इसमें इसका चलना, इसका बोलना, उसका रहना, इसका सब कुछ मेरे लिए दुस्तर हो गया है, सहन नहीं कर सकता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये उनकी कृपा है कि हमें वो भक्तों का संग दे रहे, लेकिन वो भी तो भक्त है कि नहीं? तो संग मिल रहा है। तो जब तक किसी भी व्यक्ति से हमें प्रॉब्लम है, मतलब अभी हम शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध कर रहा है, समझ रहे? किसी भी व्यक्ति से हमें प्रॉब्लम, भले डिवोटी नॉन डिवोटी, प्रॉब्लम किसी से नहीं है। डिवोटी शुड हैव नो प्रॉब्लम बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन। A devotee had no enemy, no problem, nothing. So problem is there means our anarthas are there. That's the real our enemy and problem. So he gives that. That's why नहुस नहुस बोला, हु उसको पकड़ लिया तो उसको प्यूरिफाई कर रहा है। प्यूरिफाई मतलब क्या? भगवान को छोड़ के, भगवान को याद करके सब कुछ ट्राई करना, यही क्या है हमारा सबसे बड़ा रोग है। क्योंकि भगवान को कभी ट्राई करते हैं, भगवान को ट्राई नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट ए कमोडिटी। भगवान को याद नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, सब कुछ सारा लगा देते हैं, भगवान को याद नहीं करते। तो जब तक भगवान को याद नहीं किया, हमारे क्रोकोडाइल महाराज हुहू छोड़ा नहीं, तो क्या है ये? अच्छा है बुरा है? हाँ अच्छा है ना, दिस इज सो गुड। इसलिए दैट्स व्हाई द proverb is कुंती रानी proverb मिजरी इज गुड, है ना? जस्ट लाइक जो सर्फ एक्सेल बोलता है दाग अच्छे हैं, तो कुंती रानी ऐसे बोलती है मिजरी अच्छे हैं, भगवान मिजरी मुझे और दीजिए। कौन कोई बोलता है ऐसा? कोई पूछता है भगवान मिजरी से दूर कीजिए? लेकिन कुंती रानी बोलती है कि हे कृष्ण मुझे मिजरी और दीजिए, क्योंकि जब मिजरी आती है वैसे ही हम आपको याद करते हैं, आप वैसे ही हमारे साथ रहते हैं, और आपको जितना याद करेंगे हम, उतना ही ज्यादा हम लोग आपके पास आएंगे, शुद्ध होंगे और आपके पास चले जाएंगे। न पुनर्भव
फिर से पुनर्भव नहीं होगा। तो मिजरीज आउट ऑफ मनी, फॉर मनी टू गेट, देन आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य के वन में जितने भी ऋषि थे काफी इंक्विजिटिव थे। और फिर फोर्थ है क्या, आउट ऑफ knowledge, a wise person. Who is wise? Who is the standard example of wise person who comes to Krishna? He is Sanakadi Rishi, Chatuskumaras. Yes. So सभी लोग परफेक्शन को प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि शुद्ध भक्तों का कृपा प्राप्त हुआ, इसलिए प्राप्त हुए। अदरवाइज प्राप्त होना मुश्किल है। कई लोग आते हैं पैसे के लिए आते हैं, पैसा मिल जाता है तो भगवान को बोलते टाटा। एक भक्त बोल रहा था, प्रभु जी मुझे जॉब नहीं लगा, जॉब के लिए प्रार्थना कर दीजिए, उसके बाद मैं बेस के लिए बहुत लक्ष्मी दूंगा, बेस के प्रोजेक्ट के लिए बहुत लक्ष्मी दूंगा, बहुत सपोर्ट करूंगा। उसके बाद हमने प्रार्थना करी, उसका जॉब हो गया। उसके बाद वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद वो फोन से वहां पे पैसा फिक्स कर रहा है, वहां पे पैसा लगा रहा है, वहां पे पैसा, हर जगह पैसा लगा, लेकिन भगवान को कोई पैसा नहीं। भगवान को पैसा भगवान को देना चाहिए। तुमने फोन किया, प्रभु जी वो दिन याद है जब आप रो रहे थे, बोले जॉब लगवा दीजिए प्रभु, जॉब तो लग गया, आप क्या हो, और पैसा इधर उधर फिक्स कर, प्रभु जी यहाँ पे पैसा चला जा रहा है, वहां तो पैसा नहीं। बेटा भगवान को पैसा नहीं देगा, तुम्हारा पैसा हर जगह पे जाएगा, पैसा देना चालू कर। Then he started giving Lakshmi for the pleasure of Krishna. So then his life was no okay. I don't tell the name. So it goes like that. People are simply forget. प्रॉब्लम खत्म, शरीर का प्रॉब्लम खत्म, तो टाटा बाय बाय कृष्ण, अब तो प्रॉब्लम सब ठीक हो गया है। रोज इसलिए तो आए थे हम लोग। आप लोग बोलते हैं ना आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, तो माइंड हमारा बहुत ही दिक्कत दे रहा था, तो चैंटिंग किए, माइंड हमारा कंट्रोल हो गया, तो पर्पस सॉल्व। तो आप अपने पास माइंड कंट्रोल हो गया हमारा, अब क्या करेंगे, हम अपना काम करेंगे, है ना। तो ऐसे होते हैं। हाँ, तो जिज्ञासु, और जिज्ञासु वो बंदा जो बहुत जिज्ञासा करता था, वो बंदा दिखा नहीं, फिर कहाँ चला गया। और चार माला करता है, मुझे इसको सुन के बहुत ही प्रसन्नता होती है, चार माला वो करता है, बट ही जस्ट ग्रुप अवे सिंपली आफ्टर सम मंथ, सिंपल फिनिश गॉन। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कौन होते हैं, वो रुकते नहीं है, वो छोड़ के कभी भी कृष्ण को नहीं जाते। कौन? जो बुद्धिमान नियोफाइट, फोर्थ क्लास फर्स्ट क्लास। सो प्रभु जी हम तो नहीं है फोर्थ क्लास फर्स्ट क्लास, क्या करें? तो क्या कीजिए, बनी रूपाल जी किताबें पढ़ी तो फर्स्ट क्लास बन पाएंगे, भगवान की भक्ति में टिके रह पाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? वन मोर पैराग्राफ, वन मोर पैराग्राफ। ओके, वन मोर पैराग्राफ, ठीक है, वन मोर पैराग्राफ। These four types of devotees have been described in the 7th chapter of Bhagavad Gita. They have all been accepted as pious. Without becoming pious, no one can come to devotional service. It is explained in Bhagavad Gita that only one who has continually executed कृष्ण पायस activity and those skillful reaction in life have completely stopped can take to Krishna consciousness. Others cannot. The neophyte devotee are classified into 4 groups: the distressed, those in need of money, the inquisitive, and the wise, according to their gradation of pious activities. Without pious activity, if a man is in a distressed condition, he becomes an agnostic, yeah, or communist, or something like that. Because he does not firmly believe in God, he thinks that he can adjust his distressed condition by totally his तो पहले इतना अच्छे से बताया आपने कि 4 प्रकार के लोगों में से कौन आ पाते हैं भगवान के पास में? जो पायस है, जिनके जीवन में सुकृति है, वही आ पाते हैं। इसलिए बोला था जना सुकृति नहीं अर्जुना,
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिरो अर्जुना आर्ति अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार की जो सुकृतिवान लोग वही आ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास बहुत संसार में दुख है, लेकिन क्या वो भगवान के पास आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके जीवन में सुकृति नहीं है। बहुत सारे पाप कार्य किए हैं और भगवान के भक्तों का कभी जीवन में कभी संग लाभ ही नहीं हुआ, है कि नहीं? इस प्रकार से उनको सुकृति मिला नहीं, इसलिए भगवान के को छोड़ के सब जगह पे जाएंगे और ट्राई करेंगे और कभी भी सफलता उनको नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब क्या? फ्रस्ट्रेटेड डिस्ट्रेस्ड पर्सन। कम्युनिस्ट मीन्स दिस वन, गॉडलेस फ्रस्ट्रेटेड डिस्ट्रेस्ड पर्सन, ही इज अ कम्युनिस्ट। Is going like so this, he having very no sukriti and he is distressed and he will not go to God. He will be frustrated. Anybody will come tell about God. I don't believe in God. And once I went to, we were distributing book in Nitaichandra last year. So I went to a shop and said, hey, Bhagavad Gita name. অনেক ভালো ভগবদ গীতা। ভগবদ গীতা আপনি পড়েছেন, দেখেছেন? একটু দেখায় আপনার বাংলা তো হ্যাঁ, বহুত ফ্রাস্ট্রেটেড था। কি বলে, তুমি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়েছো? কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো is some book given by Lenin, Stalin, Lenin, Karl Marx. Okay, you could be better know because you have to train for IS. Current affairs and social. So yes, maybe Karl Marx. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ेगा? नहीं, तो नहीं पढ़े। तो अभी ना पढ़ो ना, जाओ चले जाओ। निकल गया। Very frustrated, very distressed person. I thought simply I heard like भगवान माता को बुद्धि दे। और प्रसाद you cannot take. Sukriti happens by what? By accepting little prasad, smiling little bit to the seeing devotees. These are simple way one can become sukritivan. अगर भक्त को देख के वो स्माइल किया, या फिर भक्त जा रहा था ट्रेन में और जैसे ही भक्त गए वैसे ही वो उठ गया और उसके कारण भक्त को सीट मिल गई। उसको पता नहीं है कि उसका स्टेशन आया, बेचारा उठ गया, लेकिन उसके कारण एक भक्त को सीट मिल गया। वो क्या हो गया? उसका अज्ञात सुकृति, इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। भले ही वो बहुत बड़ा पापी रहा होता, कि भगवान उसको हमेशा याद रखेंगे, ये बंदा मेरे भक्त को क्या दिया? सीट दिया। सो लाइक दिस देयर इज सुकृति। तो ऐसे सुकृतिवान लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। तो समझिए कितना अनलाइकली है टू बिकम अ डिवोटी, ऑलमोस्ट अनलाइकली टू बिकम अ डिवोटी। So we all have had somewhere association of devotee in the previous lifetimes, little bit कहीं पे भगवान के चरण, भक्तों के चरण में पानी दे दिया होगा कभी, उसी कारण इधर है। That's why it's so important to distribute sukriti, because unless people have sukriti, no matter how much they will suffer, no matter how much poverty they are in, no matter how much inquisitive they are in, they can never get to Krishna consciousness. There is no way for them. Yes, that's why devotees, they go, they keep prasadam, like yesterday. Right? Somebody who cannot take the book, at least give prasadam, that's where one can get sukriti. Maybe in the future he will turn up into Krishna. So that's the way. Acharyas being so very merciful, they have given us this way of distributing sukriti. The more people get into the sukriti, agyan sukriti, somehow or other, having little soft corner for Krishna and his devotees, will make their life successful one day. Hare Krishna. Thank you so much. So we will continue on from here. Next class. From Lord Krishna. Right? From here. Yes, anything